the region's first Indian school opens in Singapore. As more Indian expatriate professionals come to Singapore, education of their children has also taken priority, resulting in the Indian Central School, the only one of its kind in the region. Even before its official opening later this month, it has already enrolled some 150 students. Pat Wan Singh visited the school at Mount Sophia. Singing Singapore's national anthem is what students and teachers do at the start of the day, followed by the Indian national anthem. Students range in age from 3 to 14 years and have lots on their plate. Even those in Primary 1 take up to 7 subjects, including IT and social studies. Besides learning English and either Tamil or Hindi, Sanskrit, which doubles up as a moral education class, is also offered as a third language. Music and dance lessons add to the variety for a more holistic education. We also teach yoga, which I feel in today's stressful society, it is very, very important for a child to learn yoga. All the negative emotions of a child, that is anger, anxiety, are taken care of, channelized into positive behavior. Currently, all teaching staff are from India, and students are encouraged to participate actively in class and build up their self-confidence. We allow give scope to the students to, think and then answer. It's not that rote learning is not encouraged. Our timetable is distributed in such a way that we always have something exciting every day apart from the regular classroom learning. Word-of-mouth marketing has spread the school's reputation, with some parents even switching schools for their kids. We wanted something a little bit conservative and morally, very strong. So we had a look at the school and it suited all our requirements. So you have the same standard of teaching techniques here and in India. So the continuity is very, very crucial. We have support from the Indian government, from the Education Ministry, as well as from the Ministry of Foreign Affairs. The school plans to have its own premises housing some 600 students in 5 years. It has also started a fundraising exercise as part of its expansion plans. Their children has also taken priority, resulting in the setting up of the Indian Central School, the only one of its kind in the region. And even before its official opening later this month, the school has already enrolled some 150 students. Channel News Asia's Pat Wan Singh checks out what's the main draw of the school at Mount Sophia. Singing Singapore's national anthem is what students and teachers do at the start of the day, followed by the Indian national anthem. Students range in age from 3 to 14 years and have lots on their plate. Even those in Primary 1 take up to 7 subjects, including IT and social studies. Besides learning English and either Tamil or Hindi, Sanskrit, which doubles up as a moral education class, is also offered as a third language. Music and dance lessons add to the variety for a more holistic education. We also teach yoga, which I feel in today's stressful society, it is very, very important for a child to learn yoga. All the negative emotions of a child, that is anger, anxiety, are taken care of, channelized into behavior. Our timetable is distributed in such a way that we always have something exciting every day. Word-of-mouth marketing has spread the school's reputation, with some parents even switching schools for their kids. We wanted something a little bit conservative and morally, very strong. So we had a look at the school and it suited all our requirements. The school plans to have its own premises housing some 600 students in 5 years. It has also started a fundraising exercise as part of its expansion plans.
वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर। यहाँ सेंट्रल स्कूल की एक ब्रांच खोली गई है जहाँ भारतीय बच्चों को भारतीय संस्कारों के सबक भी पढ़ाए जाएंगे। सिंगापुर में रह रहे भारतीयों के बच्चों को पढ़ाई के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत ही उन्हें सिंगापुर में भी एक भारतीय स्कूल मिल गया है। सेंट्रल स्कूल की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच अब सिंगापुर में भी खुल गई है। यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के अपनी इंटरनेशनल स्कूल्स है, अमेरिकन स्कूल है, ऑस्ट्रेलियन स्कूल है। So what we wanted to do was, because Indian education is already proven itself, particularly the CBSE education. So what we want to do is get in the world-class CBSE education and let the students have an opportunity to go through the same school system as has been already done in India. I think this is a very good development. I'm quite happy that the community has done this, because we do want all the Indians who are working in Singapore not to feel disadvantaged. We would like them to bring their families down here, and through the school, the children's education will never be affected. $15,000 से 20,000 भारतीय परिवारों के बच्चों के एडमिशन की परेशानी का हल इस स्कूल से निकल आया है। अभी स्कूल को खुले सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और 160 बच्चे इसमें दाखिला भी ले चुके हैं। हम खुद सीबीएसई बोर्ड के छात्र रह चुके हैं। पूरे 12 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12वीं कक्षा तक हमने सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय जो कहते हैं इंडिया में, उसमें हमने हमारी पढ़ाई की, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी माननीय क्या है। और तीसरी कारण यह है, इधर जो लोकल स्कूल्स है या जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, लोकल स्कूल्स में शायद हमें हमारी परंपरा, हमारी वैल्यूज़ वो शायद हमें ना मिले। We never get to experience proper Indian culture. This is one school I find that we actually get to experience pure Indian culture. It's a very special school. भारतीय संस्कृति के पाठ पढ़ाने का दावा कर रहे इस स्कूल से भारतीय परिवारों को बहुत उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह के और भी स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। जेंसी जैकब, जी न्यूज़, सिंगापुर। ब्रिटेन में इतना ही। फिलहाल हम अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और अफ्रीका के दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। देशात स्थायिक होणाऱ्यांबरोबरच काही काळासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत सुद्धा बरीच वाढ झाली आहे। या भारतीयांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय ही या नागरिकांसमोरची मोठी समस्या असते। भारतातून परदेशी आलेल्या या मुलांना बरेचदा मागच्या इयत्तेतच प्रवेश घ्यावा लागतो। मात्र सिंगापूरमध्ये या समस्येवर उपाय शोधण्यात आलाय, तो इंडियन सेंट्रल स्कूलच्या माध्यमातून। सिंगापूरमधल्या भारतीयांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयीसाठी स्थानिक भारतीयांनी इंडियन सेंट्रल स्कूलची स्थापना केली। आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये अभावानं आढळणाऱ्या भारतीय मूल्यांचं जतन करणं हा या शाळेचा मुख्य हेतू आहे। आमच्या शाळेत सीबीएसईचा करिक्युलम आहे, तर त्याच्याबद्दल आपल्याला काही विशेष जास्ती बोलायला जरूरत नाहीये, कारण इट्स ऑलरेडी वर्ल्ड रिनाउंड। त्याच्या व्यतिरिक्त इथे एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज, नॉन अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीज, क्लब्स, पार्टिसिपेशन्स, स्पेशल प्रोजेक्ट्स असतात शाळांमध्ये। आता हे सगळे मुलं मिळून करतात आणि त्याचे प्रेझेंटेशन्स करतात। इथे जे येतात इंडियामधनं लोकांना, त्यांना भयंकर फायदा आहे, कारण की त्याचं सगळ्यात मुख्य कारण असं आहे की आमचं जे अकॅडमिक कॅलेंडर आहे, म्हणजे जी आमची शाळा सुरू होते ती जुलैमध्ये सुरू होते आणि आपलं जूनमध्ये त्याचं ग्रॅज्युएशन होईल त्या मुलांचं। त्याच्यामुळे भारतातनं जे मधनं येतात, म्हणजे समजा कोणी डिसेंबर महिन्यात आलेत तर त्यांना इथे इमिजिएटली ॲडमिशन मिळेल, हा सगळ्यात मोठा फायदा आहे। इथलं शिक्षण खूपच चांगलं आहे आणि प्रत्येक टीचर ही प्रत्येक क्लासमध्ये मुलं खूप कमी आहेत, त्यामुळे प्रत्येक टीचरचं प्रत्येक मुलाकडे पर्सनली लक्ष असतं आणि मुलांना इथं खूप आवडतं आणि त्यांना शनिवार रविवार अजिबात घरी बसायला आवडत नाही, त्यांना वीकडेजच चांगले वाटतात। सध्या या शाळेत 160 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। या शाळेच्या इयत्ता 8वी पासूनच्या विद्यार्थ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा इंडियन सेंट्रल स्कूलचा मानस आहे। या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत येत्या 2 वर्षात मोठी वाढ होईल अशी या शाळेच्या व्यवस्थापनाला आशा आहे। सिंगापूरहून जेन्सी जेकबसह वृत्तसंकलन विभाग, अल्फा बातम्या, मुंबई। बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।
In Singapore, we have been very actively promoting a foreign talent policy, which means that we want to attract as many people as possible who can use Singapore as a base to tap the opportunities. And among the talent that we are interested in attracting is a talent from the Indian subcontinent, or Indians who have been in other parts of the world. So by having the Indian school, international school in Singapore, is going to be very helpful for us to make Indian expatriates who are based in Singapore feel comfortable that their children's education will not be compromised. So I think this is a very good development. I'm quite happy that the community has done this, because we do want all the Indians who are working in Singapore not to feel disadvantaged. We would like them to bring their families down here, and through the school, the children's education will never be affected. I think one of the things was their worry about the education system down here, which is a very competitive system, and also perhaps not fully compatible with the education system back in India. So if they are planning to come down here for a few years and then they immerse themselves into the education, the schools in Singapore, they may have problem fitting back. Next thing is enrolling themselves into the other international schools that are already down here, the American schools and the British schools, would have been a very expensive affair. The other problem that some of them faced was the academic terms. So, we start our schools in January, whereas I think in India they started in June or July. So there were difference in academic terms. So when the children came down to Singapore, typically this never fitted well for them. So by having the Indian school, Indian Central School down here, I think most of these issues will be resolved. Cosmopolitan city, Singapore government has been very supportive of people from other nationals who are based in Singapore, who want to organize themselves to set up schools, organizations that will support their communities who are based down here. So similarly, for the Indian Central School, the Singapore government should be very excited to and should be happy to support, simply because this helps make the communities here feel comfortable. They've always been open to supporting anyone who wants to do things like this. देखिए लास्ट 5-6 साल में यहाँ पे कम से कम 15 से 20 हज़ार इंडियन फैमिलीज़ ने यहाँ पे रिलोकेशन किया है ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस. Many of them have come from India, काफ़ी मिडल ईस्ट से भी आए हैं और from US as well. So when all these professionals move into one country, education becomes one of the pillar and foundation for any of the employees stay here. So this was one of the reasons, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी countries के अपनी international schools है, American school है, Australian school है. So what we wanted to do was, because Indian education is already proven itself, particularly the CBSE education. So what we want to do is get in the world-class CBSE education and let the students have an opportunity to go through the same school system as has been already done in India and other countries. नहीं, ये है इंटरनेशनल स्कूल. इसका मतलब ये है कि कोई भी नेशनलिटी, whether it is American, Australian or any Asian nationality, is eligible to study in this school. The purpose of this is to create an international environment where all children get equal footing, plus the combination of a world-class, world-proven CBSE system. This will definitely benefit all the students, and our aim is actually to develop global students. So this is one of the key strategies, is to have a mix of international students together with the Indian syllabus, and that will really create a right platform to develop a global student. See, पहली बात तो ये है कि academics should be world class. Secondly, इनका जो academics और non academics का balance है, plus जो हमारी world class, world proven teaching methodologies हैं, इन सब का combination together with all the exposure that international students can get in working together, in learning together, and being able to deliver projects or complicated assignments together will give them a lot of exposure on people relationships, working in a global environment. And if this is done at an early stage during the childhood education, this will give them a strong footing in order to work in a global environment.
Now in Singapore, the way the Singapore Cricket Association taking interest in this kind of thing, and particularly the Asian development countries, the way they are promoting a game in this country, it's amazing. I'm really surprised, and the talent is also really good talent. So this way it can be, once the school starts from grassroots level, that is the school level, it is good for the to get a good talent later stages, and this is a good beginning. Well, they like to. In fact, they have already appointed one coach for this school. He is a recognized coach from Singapore. He is taking the sort of training, giving the training to some of the children. So once it grows, then naturally we'll come into it, and then we'll try and sort of see to it that better and better cricketers come out of the school, and give them the proper sort of help or guidance. That will be a good thing. And cricket can now become a career, I can tell you that. It's tremendous, the amount of money pouring in this game is amazing. A lot of parents do not know that, but I know education is a must. It's a very good, it's very important. Besides education, if they get this also, cricket, they can make their career life very lucrative, and it will be useful for the children in future. मैं बहुत दिन की तमन्ना थी कि हमारे जो मित्र हैं आज के ज़माने के, जो सभी संसार में बिखरे हुए हैं अपने टैलेंट से, लेकिन उनके बच्चों का जब शिक्षा का संबंध होता है, प्रश्न उठता है, तो उन्हें अलग अलग किस्म की शिक्षा मिलती है अलग अलग देशों में। लेकिन हमारे मन में इच्छा थी कि हिंदुस्तानियों के लिए खास करके, ये नहीं कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग नहीं आ सकते उस स्कूल में, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए, उनके बच्चों के लिए पहली क्लास से 12वीं तक की सेंट्रल बोर्ड की एक पाठशाला हर एक देश में शुरू करनी थी। मैंने पहला प्रयास किया था न्यूयॉर्क में। प्रॉब्लम्स यह है कि जैसे सिंगापुर में या किसी देश में उस देश की शिक्षा दी जाती है, अपनी देश की शिक्षा नहीं दी जाती है। और अपने देश में भी देखो तो हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार की शिक्षा है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऐसा है कि जो पूरे देश को या बाहर के भी देशों में जो अपने सिटीजन्स है उनके लिए भी शिक्षा दे रहा है। ये एमिरेट्स में, मिडिल ईस्ट में तो तय हो ही चुका है कि इतनी स्कूलें निकालिए। सेंट्रल स्कूल्स भी मॉस्को में हैं। तो ये जो शिक्षा है, ये जो बोर्ड है, ये जो करिकुलम है, ये संतुलित है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की सभी समाज के लोगों के लिए ये सेंट्रल बोर्ड का जो करिकुलम है वो उपयोगी है और लेटेस्ट है। एनसीईआरटी के द्वारा जो हमारी करिकुलम बनती है, टेक्स्ट बुक्स बनती है, उसको आप देखेंगे तो वर्ल्ड में कहीं भी, संसार में कहीं भी हमारे बच्चे शिक्षित जो सेंट्रल बोर्ड से हुए हैं उनको कहीं कठिनाइयाँ होती नहीं है। वो बराबर अपना जो भी मेरिट है उसके अनुसार आगे चलते हैं। तो बहुत इच्छा थी कि अपने सेंट्रल बोर्ड की पढ़ाई पूरे संसार में हो। सिंगापुर में हमें पहला मौका मिला है ये इंडियन सेंट्रल स्कूल स्थापित करने के बाद, और जो हमारी इच्छाएं थी वो पूरी की पूरी ये करने जा रहे हैं। और उसका जो नतीजा है वो देख ही रहे कि हमारे पास पहले आए थे कुल 15 बच्चे, आज 150 के ऊपर बच्चे हो गए हैं। आज कम से कम 15 साल से मैं मॉडर्न स्कूल का संचालक हूँ। उसके पहले आज 35 साल हो गए मैं सेंट्रल बोर्ड से निगडित था। What we are aware of is that these children have not been exposed to international curriculum. Nowadays the children have access to many issues with the international flavor in it, and nowadays the students are more globally aware than they were a few generations before. Therefore it becomes very imperative for us to provide a comprehensive and a rich, diversified curriculum, so that we give them opportunities in which they can have the international exposure, international dimensions. Well, first and foremost, I think the major problem is the adjustment problem, because it's a new environment, new country, new culture. Therefore, we make it very sure our teachers are very adjusting in that manner,
and they see to it that the child feels comfortable. Well, we have a very strong faculty, and as teachers are the pillars of any school, they are the facilitators of the curriculum. We have very well qualified teachers with holding MA degrees, having masters in education, and they're very well experienced in the topmost schools in India as well as Middle East. ये मलेशिया जहाँ हम लोग रहते हैं अक्रॉस द कॉजवे, और यहाँ पर इंडियन सेंट्रल स्कूल पहली बार खुला है सिंगापुर में। और इंटरनेशनल स्कूल तो हमारे जौहर बारू में मलेशिया में भी बहुत हैं, लेकिन चाहत है कि अपने बच्चों को इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन दें, तो इसी कारण यहाँ पर भेज रहे हैं इंडियन सेंट्रल स्कूल। ये इसके दो कारण हैं। एक तो जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, हम देख रहे हैं सारी दुनिया में कि इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक्सेल कर रहा है, और चाहे ये ब्रिटिश सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम के स्कूल्स बहुतेरे हैं दुनिया में, लेकिन इंडियन सिस्टम के लड़के जाके यूएस में भी एक्सेल किए हैं, और बच्चे हर दुनिया में हर जगह एक्सेल कर रहे हैं। तो एक तो पहला यही कारण है कि इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा ये है कि चूँकि हम देश से बाहर रहते हैं, कल्चर वगैरह जो हमारा है वो बच्चों को देखने को मिले, सीखने को मिले। ये भी इच्छा रहती है कि इंडियन स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कल्चर पर भी जोर दिया जाएगा, और बाहर भी रह के वो भारत की संस्कृति को नहीं भूलेंगे। हाँ, यहाँ पर इन लोगों ने नया शुरुआत किया है, 7-8 महीने का ये स्कूल को हुआ है, और शुरू में तो लग रहा था कि बच्चे कम होंगे या कैसे चलेगा, लेकिन ये 6-7 महीने में रिस्पांस बहुत ही अच्छा हुआ है, और टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। सिंगापुर सेंट्रल स्कूल, इंडियन सेंट्रल स्कूल जिसे कहते हैं, वो स्कूल में हमारे बच्चों को हमने एडमिशन लिया है। उसका कारण 3 कारण है। एक ये है कि अगर हम भारतीय हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्कूल जो CBSE बोर्ड के मुताबिक चलता है, वो एक बहुत अच्छा कारण बन जाता है। दूसरा कारण है कि हम खुद CBSE बोर्ड के छात्र रह चुके हैं। पूरे 12 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12वीं कक्षा तक हमने सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जो कहते हैं इंडिया में, उसमें हमने हमारी पढ़ाई की, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी माननीय क्या है। और तीसरी कारण ये है, इधर जो लोकल स्कूल्स है या जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, लोकल स्कूल्स में शायद हमें हमारी परंपरा, हमारे वैल्यूज़ वो शायद हमें ना मिले, और इंटरनेशनल स्कूल्स में तो शायद डिसिप्लिन नाम का भी जो चीज़ है उसमें भी शायद कुछ धक्का लग सके। इसलिए हमने सोचा ये इंडियन सेंट्रल स्कूल ये सही स्कूल है हमारे बच्चों के लिए सिंगापुर में, क्योंकि हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में कोई हमें चिंता नहीं है, उनकी शिक्षा के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। अभी स्कूल में प्रिंसिपल से लेके टीचर्स, शिक्षकगण जो है बहुत ही सही नियम से, बहुत ही सही तरीके से सिखाते हैं बच्चों को, और इधर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता है, पढ़ाई के सिवा उसके आगे खेल कूद और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जिससे हमें लगता है स्कूल एक जो स्टूडेंट है उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो उसमें काफ़ी फोकस किया जाता है, और वो एक बहुत बड़ी बात है स्कूल में। Actually, I have 3 children and a 4th one is going. The academics are very strong and there's a lot of ECAs. I'm just very happy with the whole system. My children just love the school. They're very happy here. They're just everything. The teachers are wonderful. They're very, just the whole integrated system is really great there. It's basically because it gives us the best of both worlds. I mean, we are outside India, but we are going to get a proper Indian education, which I think is very important. Well, I mean, like, they won't exactly be in a completely Indian environment, but then it's the best thing, you know, that you can get outside India. My son actually, मेरा बेटा यहाँ पे पहले लोकल स्कूल में पढ़ता था, वो है अभी फ़िलहाल क्लास 6 में। जब वो पहले यहाँ पढ़ता था तो जो
यहाँ के लोकल स्कूल्स हैं वहाँ पे उसको बेसिक मैथ्स या साइंस या इंग्लिश तो वो ठीक होता था, लेकिन थिंग्स लाइक इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स वो सब मिलता नहीं था, तो जो यहाँ पे मिल रहा है। और एज एंड व्हेन या जब हम लोग वापस जाएंगे तो सेशंस भी सेम होते हैं जैसे कि इंडिया में है जुलाई टू जून, यहाँ पे तो नॉर्मल लोकल सेशंस है जनवरी टू दिसंबर। We are more or less from the CBSE board, and the CBSE board I think gives a very holistic kind of a complete kind of an education, and I think that's very, very important. I mean, most of these IIT people, the world is romancing the IITs now, but most of the majority of them are from the CBSE board. So I think it's very important. मेरे को टीचर पसंद है, मेरे को खेलना अच्छा लगता है और मेरे को पढ़ाई भी करना अच्छा लगता है। मेरे को डांस पसंद आया, म्यूजिक पसंद आया और वॉलीबॉल पसंद है। जब मैं परफॉर्म कर रही थी बहुत सारे लोग थे। I like about the school that is that because I can study and the teachers are very kind. मेरे पास बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं। मुझे ECA और CCA बहुत पसंद है। मैं क्रिकेट है, CCA में क्लब्स है। Well, I find this a very unique school in the kind of that in the local schools we always get all those Singapore history and like all those US bombings, and it's nothing special, it's nothing unique. But when you come to this school, it's like it's a whole new adventure. In Indian history, there's so much to cover. I mean, you can never complete it in one book. So I find this a very special school, and you can get to see things you've never ever seen before. Like we have been transferred to Singapore because our parents have been transferred to work here. So we never get to experience proper Indian culture. This is one school I find that we actually get to experience pure Indian culture. It's a very special school. We have so many unique dances like Bhangra, Rajasthani dances, and we speak in so many different languages. This is something you can never ever get in the local schools. This school has a lot of Indians and it has a lot of facilities like yoga, PE, games, etc. And you find a lot of Indians here, which you'll never find in any other Singaporean school. And you get to participate in a lot of things. Everyone gets equal chances. Like you get to participate in tabla performances, the Lion King, and everybody is very enthusiastic. So when you do something nice, they encourage you. And if you suppose like you don't get that good marks, they tell there's always a next time. And there are a lot of people here who we talk different languages. मुझे पहले द्वारका में पढ़ती थी और मुझे यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं लगता है क्योंकि सारे टीचर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स सब इंडियंस हैं और हम यहाँ पर डिफरेंट इंडियन फेस्टिवल्स भी सारे बनाते हैं। मुझे स्टेज पर हारमोनियम बजाने का चांस भी मिलता है और मुझे स्कूल बहुत पसंद है। यहाँ पे मीन्स मैं सब कुछ लर्न कर सकती थी और मैं पार्टिसिपेट भी कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम था, मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ लर्न करना था और वहाँ पे बहुत सारा पढ़ाई भी होता था। पहले मैं बॉम्बे में थी, वहाँ पे अब मैं सिंगापुर में आई हूँ। वहाँ पे मेरे को लगता था कि मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊँगी, मेरा सब कुछ ख़राब होगा, और मेरा पढ़ाई भी सब कुछ, मैं यहाँ पे म्यूज़िक नहीं सीख पाई। यहाँ पे लेकिन वही सेम चीज़ किया, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मैं यहाँ पे सब कुछ लर्न कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम था मेरे को। वहाँ पे मैं आई कुड नॉट लर्न, मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकती थी और वहाँ पे मेरे को बहुत टेंशन भी था क्योंकि मेरे को खेलने का टाइम नहीं मिलता था। मैं स्कूल जाती थी 7 बजे, आती थी सुबह दोपहर के 6 बजे, इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था।